Okay, done. Noted. Am I audible? Can you hear me? Yes, sir. Is it done? Yes, sir. So let us see now how to solve the numerical. You have seen that based on given type of motion, you have to draw the diagram. So diagram for constant velocity, simple harmonic motion, then uniform or constant acceleration and retardation, and cycloidal motion. Different types of displacement diagram you have to draw. Okay, and after drawing the displacement diagram, then we will draw the cam profile. How the cam shape will be obtained, we will see from the displacement diagram. Okay, so let us start with numerical then. This is the example we are going to solve. Read it carefully. So cam profile will depend on all these factors which I have highlighted. If any of these factor will change, the construction or profile of the cam will change. Okay. So first you read for 5 minutes, then we will solve the numerical. Try to write down the given data.
So did you note down? So 2 minutes. Okay. Done. Yes, sir. Yes, sir. So uh, you know that you have to draw the cam profile, and these are the given parameters. Like what is given to you is a knife edge follower. So cam profile also depends on type of follower. If instead of a roller follower is given, then there will be some changes in the cam profile. Then what is given is outstroke. Outstroke is what? When follower moves from its lowest position to highest position. It is called as outstroke of the follower. It is going out of its original position. And when it comes back from high position to low position, it is called as return stroke. So outstroke happens during first 60 degree of cam rotation. It is your cam. It is its say zero position. Okay. When this line will move to 60 degree here, then your outstroke should complete. Then after that it will dwell for next 30 degree. Means after this position when the cam will rotate to more 30 degree, that time follower will not change its position. It will hang in the top position. Then start the return stroke. Then this return stroke completed it in next 60 degree of rotation. So after that it rotates by 60 degree again. During this 60 degree, the follower comes back to its original position, and then next dwell for remaining 210 degree. So जो डिग्री बच जाता है when cam rotates during that period, again there is no change in the follower position. It will stay in its lower position only. So it is in this way you have to construct the cam. Okay, you should remember that the addition of all these angles should come 360 degree, because it rotates in one revolution is equal to 360 degree.
Then stroke of the follower is given 40 mm. So you can write that in given data. Stroke we are denoting it as by H, or in some books it is denoted by capital S. Okay. The follower moves with uniform velocity. Now see, uniform velocity is there during both out stroke and return stroke. So you have to draw the displacement diagram for which type of velocity motion, that is uniform velocity. You know how to draw the displacement diagram for uniform velocity. Draw the profile of the cam, which is our ultimate aim. When now there are two cases. First case is of radial follower. You know that in case of radial follower, the axis of the follower is passed through the center of cam. In offset follower, the axis of the follower does not pass through the center of cam, but offset. It is offset by some distance. So it is given as 20 mm. So again, based on whether a follower is radial or offset, again your cam profile will change. So it all depends on all these factors. Okay. So from this problem, you will note down what is given data first. So given data, as if I have written it correctly, okay. So it looks like that angle of rise is 60 degree, theta 0. Then after that some dual period of 30 degree. Then angle of return is 60 degree, and then again a dual period of 210 degree. If you can see that this length is not proportional to what angle is given, this length of the displacement diagram. Okay, here angle of dual 1 एंड एंगल ऑफ डुअल 2 के लिए हमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, क्योंकि फॉलोवर राइज ही नहीं हो रहा है, फॉलोवर लोअर ही नहीं हो रहा है, ना ही राइज होता है ना लोअर होता है, इट मेंटेन इट्स पोजीशन। सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसलिए हमने क्या किया है, ये लेंथ कम ही रखा है। और अगर आप नहीं भी लोगे ये डुअल पीरियड, बीच में नहीं भी बताओगे, तो भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। So we have drawn a little angle for it. Now height h is equal to 40 mm. So the height of this displacement diagram which you will draw must be 40 mm. This edge of height of the rectangle must be 40 mm. And what is given to you, that minimum radius of the cam, minimum radius of the cam is 50 mm. So minimum radius of the cam is known as base circle radius, base circle radius. Okay, so that I have shown with the help of this letter RB equal to 50 mm. Then we no doubt we have drawn the rectangles. One rectangle is for angle of rise, one rectangle is for angle of return, and in both uh, in rise and return, the motion is of uniform velocity. Okay, so accordingly you will draw this diagram. So first you draw this diagram, this rectangle. So take h as 40 mm, h as 40 mm, और थीटा 0 को आपको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसके हिसाब से आप उसको 30 mm ले सकते हो ये लेंथ, या फिर 60 mm ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, either you take 30 or 60 mm. Angle of dual you can keep any, like 10 mm, 15 mm, anything. एंगल ऑफ रिटर्न को भी हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसको भी आप 60 mm ले सकते हो या 30 mm ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
30 mm लोगे तो 5 mm के पार्ट्स में डिवाइड करना है, 60 mm लोगे तो 10 mm के पार्ट्स में डिवाइड करना है। एंड अगेन फॉर एंगल ऑफ डुअल यू कैन टेक एनी लेंथ, ये लेंथ कितना भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो टू ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फर्स्ट यू ड्रॉ दिस, देन वी विल सी दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम कैसे ड्रॉ करते हैं। So we need to make this on the drawing sheet. यस, ये आप ड्राइंग शीट पे बना लो। अगर आप नोटबुक में बनाओगे तो आपको फिर से ड्राइंग शीट में बनाना है, हमें ड्राइंग शीट की शीट भी कंप्लीट हो जाएंगी इन दिस वे, या फिर आप बाद में फेयर करके बनाओ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अभी ये आपका ड्राइंग शीट हो गया ऐसा, तो यहाँ पे हमें आई थिंक द टाइप बॉक्स इज देयर, तो आप ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम यहाँ बना लो, या फिर इसको यहाँ से छोड़ दो, आप डिस्प्लेसमेंट डायग्राम यहाँ बनाओ, ठीक है। और इसके नीचे आप यहाँ पे वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम भी बना सकते हो, और यहाँ पे हम कैम प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। या फिर अभी नोटबुक में नोट डाउन करना है तो नोटबुक में आप नोट डाउन करो, विथ स्केल आपको बनाना है। और अगर फिर भी अगर आपके पास ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो अभी आप पेन से बनाओ, रफली बनाओ। टू मिनट्स में बना लो अगर लगता है तो, नहीं तो 3 मिनट्स लो। I will plug in the charger. ओके, बनाया, डन। इट्स सिंपल, सिर्फ एक ही डायमेंशन लेना है 40, और ये 60 और ये 60 या 30 कुछ भी ले सकते हो आप।
Done? Done, sir. Okay. So this we know that we have to divide the rectangle into 6 equal parts in every case. So that we can complete. ये rectangle को 6 parts में divide कर दो. These are 6 equal parts. So starting from 0, ये हो गया आपका point 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parts में divide किया. This rectangle angle of return इसको भी 6 parts में divide कर लेंगे. अगर हो गया तो बताऊंगा. And so Okay. So look at here that up to 6 we have labeled here. So during dual period there is no change in position. So we will label this line also 6. Okay. And after that we will label them as lines as 7, 8, 9. This is 10. This one is 11 and this one is 12. Now for uniform velocity, if you remember how we draw the displacement diagram. So as follower is rising, we will start from lower corner because it is angle of rise and it is the stop point. Okay. So in case of uniform velocity, we just draw the line. If you remember, we just draw the line between these 2 points, start point and end point. In case of uniform velocity, because the follower is rising uniformly at constant rate. So when you draw this diagonal only is your displacement diagram. You can make it a bit darker as compared to these vertical lines. And where this diagonal will intersect the vertical line, those points we will label as 1 dash. यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पहले मिल जाता है और बाद में आप ये पॉइंट मार्क करते हो. अदर मोशंस में पहले हमें वो पॉइंट्स मार्क करने होते हैं और फिर हम एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करते हैं थ्रू देम. तो ये हो गया 1 डैश, दिस वन इज योर 2 डैश, then this one is your 3 dash, this one is 4 dash,
Now this one is your 5 dash एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 डैश. ये पॉइंट भी आपको हम सेम ही लेवल करेंगे 6 डैश बिकॉज देयर इज नो चेंज इन पोजीशन. फॉलोवर अब पोजीशन में अप में ही रहेगा ड्यूरिंग दिस एंगल. सो यू विल ड्रॉ दिस लाइक दिस. गॉट इट. नेक्स्ट अभी लो एंगल ऑफ रिटर्न. So during return also the velocity is uniform. So we will again draw a line in return. But during return the follower is initially at high position and then it will descend back to the low position here. So we will join the line like this. Not like this. It is not rising. It is returning. Okay. So you will get a point here which we will label as 7 dash. Here 1 8 dash. Then this one is your 9 dash. This one is 10 dash. This is 11 dash and 12 dash will be here only. So you complete this. This is your complete displacement diagram for total 360 degree. After 12 point it will remain stationary. उसका position फिर से change नहीं होगा during dual period. One more thing, after this session is over, should we again start the session and complete this problem or should we continue next practical? नेक्स्ट प्रैक्टिकल सर. ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम कंप्लीट कर लेंगे. उससे पहले मुझे आप 3 ड्राइंग शीट सबमिट कर दो उसका स्कैन करके. एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ योर व्हाट वी कॉल ICR मेथड. उस पर हमने 2-3 प्रॉब्लम किया है. वही प्रॉब्लम रीड्रॉ करो अच्छे से ड्राइंग शीट पर और उसका स्कैन करके अपलोड कर दो. मैं असाइनमेंट एक्टिवेट करता हूँ. दूसरा असाइनमेंट है रिलेटिव वेलोसिटी. उस पर हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए तो आप वो 2 ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दो. थर्ड इज योर एक्सेलरेशन. उस पर जितने प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए उतने आप ड्रॉ कर दो और सबमिट कर दो. तो 3 ड्राइंग शीट तो हो जाएगा और ये चौथा रहेगा. ठीक है, तो 5-7 मिनट बाकी है. उसमें हम देखते हैं कि किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं. आप ये ड्रॉ करो ये लाइन और ठीक है हम नेक्स्ट टाइम ही कंटिन्यू करेंगे. आप इतना ड्रॉ कर लो. इट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम. इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ वेलोसिटी, टाइप ऑफ मोशन. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ऐसे बनाते हैं. फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन वी कंस्ट्रक्ट अ सेमी सर्कल हियर. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन के लिए जो मिडल लाइन है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. और साइक्लोइडल मोशन के लिए यहाँ पे लोअर कॉर्नर पे सर्कल बनाते हैं. वो आपको याद होना चाहिए प्रोसीजर. तो ये नोट डाउन कर लो. कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल में इसको कंप्लीट कर लेंगे. 6 मिनट बाकी है. आई विल बी ऑनलाइन. आपका हो गया तो आप लॉग आउट कर सकते हो. सर रिलेटिव वेलोसिटी वाला कौन सा असाइनमेंट है? रिलेटिव वेलोसिटी वाला कौन सा वो असाइनमेंट? हम उसमें वेलोसिटी पॉलीगॉन बनाते हैं. वेक्टर का नाम रहता है AB. तो वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, लाइन पैरेलल टू एंड परपेंडिकुलर टू द लिंक बनाते हैं. मैं वीडियोस अपलोड करूँगा अभी जितने भी लेक्चर्स हुए हैं बाद में. तो आप वो एक ऑलरेडी मैंने लिंक आपको शेयर किया है राइट.
उसी लिंक पर आपको दूसरे वीडियोस भी मिल जाएंगे कॉम के, अभी मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। सर क्योंकि अभी बाकी हमारा आपने पहला ही असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, आई थिंक एक ही असाइनमेंट मिला है मुझे, किसी एक ही ने सबमिट किया है पहला असाइनमेंट। तो टर्म वर्क हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? सबको तो एक जैसा टर्म वर्क नहीं दे सकते ना, कुछ क्राइटेरिया सेट करना है कि किसने असाइनमेंट सबमिट किया है, किसने सबमिट नहीं किया है, वो एक क्राइटेरिया है। दूसरा अटेंडेंस का क्राइटेरिया है। ये सब मैटर करता है। और मैं अभी ज़्यादा आपको असाइनमेंट भी नहीं दूंगा, एक असाइनमेंट पहले हो गया, ये आप एक शीट्स सबमिट कर दो और एक असाइनमेंट दे दूंगा, बस हो गया। या फिर अगर 2-3 असाइनमेंट दूंगा तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखूंगा, 3 या 4 एक असाइनमेंट में क्वेश्चन। लेकिन आपको अगर इतना सर, टाइम मिल रहा है तो आपने करना चाहिए। हाँ, यस। sir, in the first assignment we are unable to calculate the ICRs. Can you guide a little bit once again? जरा कैन यू स्पीक लाउडली अ लिटिल बिट? Sir, can you guide us once again on how to calculate ICRs in the first assignment? द फर्स्ट असाइनमेंट, सो Sorry, दैट sorry, not ICR, degree of freedom. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके 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 ओके, आई विल सो वन थिंग यू कैन डू दैट, वो क्वेश्चन आप स्किप कर दो अभी, और बाकी के क्वेश्चन अपलोड कर दो असाइनमेंट के, फिर वो क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। Okay, sir. आपका जर्नी ट्रैवल टाइम तो बच रहा है कॉलेज का, तो आपने फिर वो यूटिलाइज करना चाहिए मेरे ख्याल से। ऑनलाइन तो थोड़ा स्लो हो ही जाता है। ठीक है, अगर डाउट है तो आप पूछो, अदरवाइज देन इफ यू हैव नोटेड डाउन यू कैन लीव। आई एम हियर ऑनलाइन ओनली फॉर 3 more minutes.